अछि मोहम्मद मुकीम विधायक थिले बेटा जो सोफिया फिरदौस विधायक अछि सोफिया फिरदौस को परफॉर्मेंस मध्ये विधानसभा बहुत भल अछि किंतु दल रे मोहम्मद मुकीम को अणदेखा करा जाउछि बा तांकर कोनोसी इंपोर्टेंट कथा को ग्रहण करा जाउ नै ताकू कोनोसी कथा रे आलोचना को डका जाउ नै एबो अनेक कथा रही छी जा कि अनेक दिन धरि विवाद लागि रही छी परखरे से विवाद गुड़ को जल जल देखा भी जाउतला किंतु आज जो चिट्ठी लिखिछन्ती सोनिया गांधी को मोहम्मद मुकीम एठू स्पष्ट भावे छा पहुंची कि मोहम्मद मुकीम भक्तनाथ को नेतृत्व को पसंद करूनाती ग्रहण करूनाती राज्य नेतृत्व पर से सीधा प्रश्न उठैछन्ती और राज्य नेतृत्व सभापति को आख पाखरे जो कुछ वरिष्ठ नेता वर्तमान रहउछन्ती सब कार्यक्रम रे तांको ऊपर मध्ये प्रश्न उठैछन्ती से गोटे इंपोर्टेंट कथा लिखिछन्ती जो माने काम करूनाती केवल देखाणिया भावे रहिछन्ती सेही भले लोकन का हाथ रे दलर दायित्व दिया जाउछि जो माने परिश्रम करछन तांको हाथ रे काहेकि दायित्व दिया जाउ नै और एही प्रक्रिया जार दल मौसमी ए चिट्ठी रो कोन आपण अनुमान करि पारुछन्ती जेतु कांग्रेस पॉलिटिक्स को आपण बहुत निकट रो देखुछन्ती पाखरु देखुछन्ती एतु कोन आपण अनुमान करि पारुछन्ती जे मोहम्मद मुकीम संतुष्ट नुहंती भक्तदास को नेतृत्व प्रति ना से कांग्रेस रे ही संतुष्ट नुहंती वर्तमान कांग्रेस रे बहुत दिन धरे मोहम्मद मुकीम रहे आपण शरद पटनायक को समय देखंतु सेतबेले भी हमें देखुतलु कि मोहम्मद मुकीम को अण देखा कराउतला सेतबेले मोहम्मद मुकीम निजे चाहुतले पीसी सभापति देबा पई किंतु ए जो पीसी सभापति रेस और दिल्ली रे कार दबदबाजी से चल रे से पछे पड़ी हेतिले तापर जेतले भक्तदास आसिले सेतबेले हमें देखिलु मोहम्मद मुकीम एते सक्रियता भाबे भुवनेश्वर बा कांग्रेस भवन को आसुनांती बा सेबेले बड़ प्रोग्राम रे जोग दोनांती किंतु किस दिन बहुत भलो भाबे चलिला भक्तदास कार्यक्रम समस्त को साथे लेके से चले लेकिन धीरे धीरे बे नुवा पड़ा उपनिर्वाचन फलाफल आसला परे ही मुकीम वर्सेस भक्त विवाद आउरी अधिक घनेछि एही विवाद एतिपई घनेछि कि जेतबेले भक्तदास नुवापड़ा निर्वाचन फलाफल आसीबा परे एयरपोर्ट रो लेकी कहिले कि किछि बेबिसन अछंती दल रे तापर किछि गणमाध्यम रे मोहम्मद मुकीम और रमेश जेलंगन सिरासर प्रकाश करि गेला से समय मध्ये मोहम्मद मुकीम शृंखला कमिटी को चिट्ठी लिखिथिले और सभापति भक्तदास के विरुद्ध रे कार्यक्रम पे शृंखला कमिटी को अनुरोध करथिले तो से विवाद सेतबेले लागि रही जेतबेले विभीषण रो बम पकईले पीसी सभापति भक्तदास से दिन में देखुछु किसी न किसी विवाद मुकीम वर्सेस भक्त लगी रही एते जो लंबा चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखिचंती मोहम्मद मुकीम लागुछि कि चिट्ठी परे हुए तो मोहम्मद मुकीम आउ किछि राजनीतिक बड़ निष्पत्ति निकट रे नै पारंती तांकर मन उठी गलानी कांग्रेस रु से बहुत चेष्टा करी कि दल रे एडजस्ट करया पई चाहिले भी बर्तमान तांकर सीमा ये मोहम्मद मुकीम को एक प्रकार फ्रस्ट्रेशन रो प्रतिफलन बोली कहबा मौसमी से मोहम्मद मुकीम एकदम हताश हे गणी कांग्रेस को अभियोग करी करी कि हाईकमांड को पाखरे तांको कथा पहुंचाइबार से बारंबार विफल होउचंदी एवं शेषरे से चिट्ठी रो आश्रय नउचंदी माने अर्थात कोठी ना कोठी तांको भीतर गोटे हताशा भावना सृष्टि होईची किछि मास धरी बा किछि दिन धरी निश्चित भाव भवानी चिट्ठी यही स्पष्ट कर मोहम्मद मुकीम बर्तमान चेष्टा करी विफल हेले दल रे जाते चाहूचंदी करया पे हेई पारु नाही संगठन भी मजबूत हेई पारनी तांको अण देखा करा जाउची से जो निजर कथा रखिया पड़ी जाउची ता मध्ये ठीक से हेई पार नाही तो लागुची कि से चेष्टा करी हताश हे गेलानी बा तांकर मनोबल भांगी गलानी आउ लागू नाही कि भक्तदास मोहम्मद मुकीम को भीतर पैच पड़ी पारिबो बोली हुए तो जदि वरिष्ठ नेता माने एकाठी होती आलोचना करते ताले किछि हेई पारे किंतु भवानी गोटे कथा गोटे मेसेज एइथुरु सामना को आसुची कांग्रेस रो कि चारि अडको आपण जुआर को देखिबे सबुटी विरोध रो सामना वर्तमान सभापति को करिया पई पड़लानी नुवापड़ा निर्वाचन सभापति विरोध टिके जोरसोर रे बाहरची और सीधासल किछि जण अछन्ते जो माने सभापति को विरोध रे अभियोग भी आणुछन्ते किंतु एठी रहिला कथा विभीषण उपाख्यानटी कोट ना कोटी टिके कष्ट देइछि कि मोहम्मद मुकीम को मौसमी ए जो विभीषण उपाख्यानटी कोट ना कोटी टिके परखेर हो पछे मोहम्मद मुकीम को कष्ट देइछि कि निश्चित भाव कष्ट रही कारण सीधासल एक पेपर रे बाहरी गला मोहम्मद मुकीम ना कि तांकू सभापति विभीषण आख्या देके प्रतिक्रिया रखिछे बेले जाकी सभापति प्रतिक्रिया रे ना कारण नहीं नथिले किंतु तो देखिया कथा कांग्रेस रे आगामी समय रे कोन घटुची एवं कांग्रेस राजनीति रे बड़ हलचल मोहम्मद मुकीम कर कनक न्यूज को एक्सक्लूसिव प्रतिक्रिया जे जेतबेला पर्यंत भक्तदास पीसीसी रो सभापति रहिचंती राज्य कांग्रेस रो नेतृत्व नउचंती सेतबेला पर्यंत कांग्रेस राज्य रे उधई पारिबो नाही या परे कोन प्रतिक्रिया आसुची कांग्रेस बा पीसी सभापति ताको अपेक्षा रहिला किंतु एक गुरुत्वपूर्ण बा ब्रेकिंग न्यूज वर्तमान समय कनक न्यूज रे एक्सक्लूसिवली प्रतिक्रिया दउथले मोहम्मद मुकीम मौसमी मध्य बाबद रे पीसी सभापति शरद पटनायक समय दल साधारण निर्वाचन में मात्र 13% भोट पाई 2025 रे भक्तदास को दायित्व दिगला निजे 3टी निर्वाचन हारी कांग्रेस विचारधारा ठारू भक्तंकर विचारधारा भिन्न निज संसदीय क्षेत्र में नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे तांको नेतृत्व में 83,000 भोट रे कांग्रेस हारी पुओ कौशल राज्य दाबी कर
सहयोग करुछंती। कांग्रेस कर्मी द्वंद्व 3 वर्ष होला चेष्टा करी राहुल गांधी को से भेटी पारना एक उल्लेख करिसेंती। जहां दलर नेतृत्व और तृणमूल स्तर में काम करुवा कर्मी भितर बढ़ुवा दूरता को दर्शाऊँ। मोहम्मद मुकीम एक कहते कर्मी मैंने दल ठारू भावनात्मक भाव में दूर होती। बूथ कर्मी ब्लॉक सभापति और जिला स्तरीय नेता दल में अणदेखा संगठन सृजन अभियान भल लक्ष्य कर दक्षता को देखागला नहीं गोष्ठी होई निष्पत्ति निगला। तो ये एक्सक्लूसिव चिट्ठी आम आपन को देखो मोहम्मद मुकीम जहाँ लिखिं सोनिया गांधी निकट को एवं ये चित्र यह दर्शाऊँ जे से तृणमूल स्तर कर्मी द्वंद्व एवं दिघर आ हतोत्साहित होती पुओ कौशल राज्यपाई दाबी कर संपर्क में मौसमी अधिक अपडेट देवाई आम सहित फोन लाइन उपस्थित होती। मौसमी ए चिठी रे सोनिया गांधी को कौन सब विस्तृत भाव में उल्लेख कर मोहम्मद मुकीम? देखो आप जानते कांग्रेस से कंदल लगी रही भितर आम देखु कि कांग्रेस जो पीसीसी सभापति भक्त दास अच्छा कटक बारवासी वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद मोकिम भितर मनमालिन्य घटुची और दूरता वृद्धि पाउची। आज मोहम्मद मोकिम सोनिया गांधी को गोटे भावावेगपूर्ण चिठी लिखिं 3-4 पेज से चिठी लिखिं। से चिठी जो सारांश रही आपको विस्तार भाव रखा चाहे मोहम्मद मुकीम से पुंखानुपुंख भाव निज मनर कथा लिखिं और राज्य केमती दुर्बल स्थिति में राज्य कांग्रेस नेतृत्व रही से कथा से उल्लेख कर मोटामोटी भाव कह गले पीसीसी सभापति दुर्बल अच्छा राज्य नेतृत्व दुर्बल अच्छी हटेबार आवश्यकता अच्छी ये किसी बुझा पड़ुची मोहम्मद मुकीम चिठी से कांग्रेस नेतृत्व केमती राज्य में दुर्बल अच्छी पीसीसी सभापति पूर्वतन पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक आरंभ कर भक्तदास पर्यंत केवल भाव कांग्रेस ये स्थिति रही से कथा चिठी उल्लेख कराई लिखाई कि शरद पट्टनायक जो पीसीसी सभापति थे से कांग्रेस 13% भोट पाई दलर नेतृत्व दुर्बल होता दल आहरी तल स्तर को खसीला संगठन दुर्बल मोहम्मद मुकीम मौसमी टिके हम सहयोग चाहूँ आपनकर मोहम्मद मुकीम सीधासख आम सहित लाइव फोन लाइन अधिक आलोचना करने एक्सक्लूसिवली उपस्थित अच्छा श्रीयुक्त मोहम्मद मुकीम आलोचना को आपन को स्वागत। आपण कौन पाई नेतृत्व को लेकिन प्रश्न उठाई सर? नेतृत्व को लेकिन प्रश्न उठे नहीं जड़े कांग्रेस सच्चा कर्मी हिसाब रे वर्तमान जो परी भाव रे कांग्रेस दल गति करुची सारा भारत वर्ष रे एवं निर्वाचन पर जनरल इलेक्शन पर जो 5टी राज्य रे निर्वाचन होईची एवं उपनिर्वाचन होईची आमे सबुरी डिजास्टर होची। मु तो आज पर्यंत बुझी पाली नहीं दिल्ली रे आमे 3टा निर्वाचन रे सुन पाउछु एवं केंद्रीय नेतृत्व सेट रहउछंती। ओडिशा रे मध्य सेपरी भाव रे गत थर आमे 18 जन लीडर को डाकिले दिल्ली रे आलोचना करिया पई एवं आलोचना सरला परे चित शरद पट्टनायक को मनोनीत कराला पीसीसी सभापति भाव रे जे कि 6टी निर्वाचन कंटिन्यूअस प्रोसेस 98 हारी के आसुथिले ताली माप काटी हे जी अधिका निर्वाचन हारिब एवं से दल नेतृत्व नब एवं दल को रसचलदानी करिब एवं 13% भोट आनी से छाड़ दे गले एवं से जो निर्वाचन लड़िले से 15,000 भोट पाई डिपोजिट प्रॉफिट हैला पुनश्च दिल्ली वर्तमान श्रीयुक्त भक्त चरण दास को दायित्व देइछंती। जो भक्त बाबू एकदा ओडिशा को भाग भाग करी कौशल राज्य तैयारी करिया पे संगठन करके आंदोलन चलैतिले एवं कनक टीवी मध्य तार साथी परवर्ती अवस्था रे आमे समस्त कोऑपरेट करिया पे बसिथिलु कोऑपरेट मध्य करूथलु किंतु से जोपरी भाव रे नुआपड़ा निर्वाचन को परिचालना करले आमे अनुभव करूथलु जेहेतु तांग निर्वाचन मंडली अछि से मध्य प्राय 6टी निर्वाचन भितर गोटे निर्वाचन जीतछंती 5टी निर्वाचन निजे पराजय होइछंती एवं कंटिन्यूअस 3टी निर्वाचन से पराजय होइछंती एवं तांको दायित्व दिया हला एवं तांको निर्वाचन मंडली निर्वाचन हला एवं आमे 83,000 भोट रो हारिलु एवं हारिला परे निजे दायित्व न नै जो परि भाव रे
से दायित्व ठेली अन्य मान मुंडरे परवर्ती अवस्था कहले जदि भूल होइतो ताले आत्म समीक्षा करिवे तो मु सोनिया गांधी को लिखा उद्देश्य है जे सोनिया गांधी को नेतृत्व में कांग्रेस करथिला सोनिया गांधी को नेतृत्व में 10 वर्ष दिल्ली शासन करथिलु किंतु ता परवर्ती अवस्था रे नेतृत्व सोनिया गांधी को पाखरु राहुल जी को पाखरु जीवा परे आमे तीनोटी निर्वाचन पराजय ग्रहण करिछु किंतु सेही राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी तो भक्तदास को सभापति करिसंती एवं जेतरे भक्तदास सभापति हेले सेतरे आपण मान तो कहितले जे सर्वसम्मति बा समस्तंकर एथरे सहमति अछि एबे असहमति काहे कि आपनकर देखो सहमति आमे समस्तंकर सहमति नै दिल्ली रे जाको मनोनीत करा जाए हाई कमांड जाको दायित्व दियंती समस्त जाको कोऑपरेट करंती ता माने निष्पत्ति थोपी दिया जाए हाई कमांड जाको दायित्व दियंती आज्ञा कांग्रेस दल होची हाईकमांड दल हाईकमांड जहाँ दायित्व दियंती ताको समस्त कोऑपरेट करू जेहेतु निष्पत्ति दिल्ली रु आसी अच्छा किंतु से निष्पत्ति ऊपर तर्जमा करिया समय आसी जाइछि भवानी बाबू बर्तमान जो स्थिति दे सारा भारत वर्ष रे कांग्रेस गति करूछि जदि आमे परी सच्चा कांग्रेस कर्मी तो समस्त मुह चुप करी बसिबा और लक्ष लक्ष कोटी कोटी कांग्रेस युवक मानक भविष्य अंधार आड़क जाउछि एवं आमे बिहार रे 243 टा सीट मात्र 6 सीट जीतुछु ता ऊपर मध्य वोटर को कनेक्ट करा जाउ नै मु तो निजे आपन को लागुची जे तो मोहम्मद मुकीम ए चिट्ठी आपनकर गंभीरतार सहित हाई कमांड नेबे एवं किछि एक्शन नेबे बोली आपन को लागुची ना एक्शन कहीं नेबे चिट्ठी ऊपर हमें चिट्ठी हमें तो हमें नहीं वो कहली जो चिट्ठी रे गुरुत्वपूर्ण दिग को ने कि आपन उल्लेख करिसंती से दिग रे एक्शन किछि नेबे बोली जेते बेले जयपुर रे जोधपुर हमरो समावेश हेतिला आगे सेति मध्ये निष्पत्ति नि आइतिला पोस्टमार्टम करा हेतिला एवं युवक मान आगु बढ़िया पे प्रोत्साहित करथिले तो जथा उछि आमे कहूछे गोटे कथा एवं करूछु आ गोटे कथा जड़े विरोध दल भूमिका निर्वाह करिया पे जड़े 83 वर्ष लोक हमर एआईसीसी मुखिया ही बसचंती एवं मु देखिली बिहार निर्वाचन रे सेमिति किछि पेजेस रहलानी ताकर निर्वाचन प्रचार करिया पे किमा संगठन को आगु नवा पे हमें कांग्रेस जितवा केमतिया राघु बक्सिया केमतिया तो ये विषय रे हमें टाइम मागिलु मु तो राहुल गांधी को 3 वर्ष ला टाइम मागुथि टाइम दउ नांती जवाब देखिया पे काहे कि राहुल आपन को भेटु नांती बोली लागुची आपन को हमें इतने विधायक छिलु हमें समय मागिल राहुल गांधी भेटिया पे आलोचना करिया पे से दिल्ली भुवनेश्वर आस्तिले गत 3 मास तले एवं से टीएसी मीटिंग पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी अटेंड करथिले सेठी मध्ये मु तां कहिथिली जे जानकी वल्लभ पटनायक को परे आउ ओडिसा रे फेस के नांती ये कि कैन ओडिसा फेस तो आपण किसी सभापति तांग चौकी रे थांतु किंतु आपण जदी दिल्ली डायरेक्टली जदी किसी नेचुरल लीडर को दायित्व न दिए विभिन्न जोन रो कल कांग्रेस संगठित होई पारिबो नाही एवं ता ऊपर जेकोन कार्यक्रम नाही ने दल थरु कर्मी माने दुरौचंती ए कथा आपण केबे पीसी सभापति को कहिचंदी ओ विषय रे सभापति को केबे आपण कहिचंदी बाबत रे चिठी रे किछि परा देखुचंती जेकी पठै सोनिया गांधी को पाखो नहीं मु कहली पीसी सभापति को बाबत पाखो को केबे क्षमा करिवे ए बाबत रे जणैचंदी आपण बहुत सारा हमें डिस्कशन करिचे पीएससी मीटिंग रे गोटे पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी हुए सर्वोच्च कमिटी से कमिटी रे जा डिस्कशन हुए ता इंप्लीमेंट हुए नहीं हमें सेठी मध्ये कहिथिलु ये नरसिंह मिश्र परिजन वरिष्ठ नेता ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर देछन मु इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जिबी नहीं एवं सबले कांग्रेस संग्रा एवं पूरा विधानसभा तांको मोहम्मद मुकीम एथरो ए जो चिट्ठी रो एति के अनुमान करि परिबो कि आबे जे मोहम्मद मुकीम कर मन आ कांग्रेस रे नाही ए मोहम्मद मुकीम चाहउछंती कांग्रेस दल को लाइन आनिया पई तो केही गोटे तो आगु को भारीबो तो मु चिंता करली जे समय आसी जाई छी हमें आउरी नेतृत्व देरी करिवु ताल होय तो दिल्ली बुझिया को देरी हे जीवो कांग्रेस जो 2-3 स्टेट अछि ता मध्ये हाथ छोड़ा हे जीवो ने 83,000 वोट रे कांग्रेस सारिबा एवं भक्तदास को निज संसदीय क्षेत्र रु कांग्रेस सारिबा को नेकरी अन्य नेता माने तो ए बाबद रे केबे चिंता प्रकट करी चिट्ठी लिखिनांती अध्यक्ष को हाई कमांड को अन्य नेता मानकर कार्यक्रम तांको विषय सीमित अछि मो कार्यक्रम मो सहित अछि एवं मुजा अनुभव करछि उचित कांग्रेस दल पाई मु से पदक्षेप नेके चिट्ठी लिखिछि एवं एतरे कि हिंसा छपा दे समस्त
कॉपी टू ऑल सीडब्ल्यूसी मेंबर्स करके जे चिंता करबा समय आसी समस्त को कांग्रेस को जो कथा हमें करथिले जयपुर सम्मेलन ले ता इम्प्लीमेंट करा जाऊ नहीं एवं ए जो संगठन सृजन कार्यक्रम आरंभ है एथे मध्य जे ग्राउंड रू लोकों का नेतृत्व को बता जीवा पे निष्पत्ति नला हला एवं जो परि भाव रे लोकों बता हला ता आपण जानि छंती एवं सारा भारत वर्ष मध्ये से हला तेनो जेतले कांग्रेस निजको निजे पोस्टमार्टम न करिवो ताले कांग्रेस सुधरी पारिबो ने आमे कांग्रेस दल भितर जणे सत्ता कर्मी एवं कांग्रेस को आमे जोड़ीचु आज जदी कांग्रेस कटक शहर परि जगह रे जेतले कांग्रेस सरकार थिला जीति पारु नथिला ता परवर्ती अवस्था में जेतले बिजू जनता एक कथा कहा जाए जे कांग्रेस रो जदी राज्य रो किछि वरिष्ठ नेतांक सहित राहुल गांधी भल संपर्क राहुल गांधी तांको खोजंती ता भितर मोहम्मद मुकीम आसंती पुणी आपण को किए दूरे देला राहुल गांधी को भेटिबा को भक्तदास सेतरे प्रतिबंधक हेलेनी तो ताने सुनतु जे प्रतिबंधक होंतु किंबा न होंतु जहा मु जणे कांग्रेस कर्मी हिसाब अनुभव कली मु ताकू सोनिया गांधी को सर्वोच्च नेतृत्व को लेखिक देछि जे आपनकर नेतृत्व रे याकू पुणी आपण ओपन हार्ट सर्जरी करंतु समस्त को नेकी सुधारी कांग्रेस मजबूत कर जदि कांग्रेस हाईकमांड ए बाबद कौन सी निष्पत्ति न नियंती ताले मोहम्मद मुकीम का आगामी अभिमुख्यटी कौन हबो मोहम्मद मुकीम कांग्रेस छाड़ देबे हाईकमांड निष्पत्ति न नेबे बोली काहे मु भाबी भी वर्तमान तो नहीं जदि जदि बोली आपण भाबंतु जे जदि हाईकमांड निष्पत्ति नौ नांती कोनोसी पॉलिटिकल आंसर देबी नहीं वर्तमान भवानी बाबू मोर दृढ़ विश्वास अछि मु जो चिट्ठी लिखी छी बहुत आत्मविश्वास से लिखी छी एवं जा सत्य कथा को लिखी छी से राहुल गांधी सब बड़े कोहंती आ डर मत वो सही भाषा को नहीं की तेरे हमें भारतीय जनता पार्टी डरू ने हम दल तो गणतांत्रिक दल हम समस्त अधिकार अच्छी हमें से दल भितर जहाँ भूल ठीक अच्छी जेहेतु आमको से भेटू ना आम सहित आलोचना हो नहीं हमें गोटे छोटे इंस्टेंस बर्तमान बहुत एमती अच्छी जोटा कि हमें खोलिले बर्तमान इतिहास हम तो लंबा कहानी हम किंतु मुझे भितर जाऊ नहीं मुझे चाहूँगी कांग्रेस सुधरू जो जिनिस जो समस्त जदि आपनक चिट्ठी को भाबी नियंतु जदि आपनक चिट्ठी को गुरुत्व न मिलला हाईकमांड गुरुत्व न देले ताले मोहम्मद मुकीम आगामी समय रे करिवे कोन मु पूरी सुनस्त आपन कहबी जे मो दृढ़ विश्वास अछि सोनिया गांधी चिट्ठी को गुरुत्व देबे एवं गोटे आलोचना ता ऊपर हेबो भक्तदास आपनकर सभापति हिसाब रे पसंद रहंती वर्तमान निर्यास बाहरिबो के कहले भक्तदास आपनक पसंद रो पीसी सभापति रहंती वर्तमान भक्तदास नेतृत्व रे ओडिसा रे कांग्रेस हेई पारिबो नै ता सूचना मिली गला हमको वर्तमान नुआपड़ा इलेक्शन रो माने भक्तदास रहिले कांग्रेस उधेई पारिबोनी उधेई पारिबो नै बिल्कुल ओके ये बिग ब्रेकिंग बा बड़ न्यूज बा बड़ खबर बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद मुकीम एक कथा कहउचंती जे भक्तदास जदि सभापति रहिबे कांग्रेस रो ताहाले कांग्रेस उधेई पारिबो नाही श्रीयुक्त मोहम्मद मुकीम ताहाले किए सभापति रहिले कांग्रेस आगो को बढ़ी पारिबो बोली आपण भाबुचंती श्रीयुक्त मोहम्मद मुकीम बोधे मोहम्मद मुकीम का सहित जोगाजोग संपर्क चिन्ह होइछि एवं ये ब्रेकिंग न्यूज बा बड़ खबर टीवी सामना को आसीबा दरकार जे मोहम्मद मुकीम को भलिया जड़े कांग्रेस रो वरिष्ठ नेता एक कथा कहउचंती जदि भक्तदास पीसीसी सभापति बा कांग्रेस रो नेतृत्व नियंती बा सभापति रुहंती ताहाले कांग्रेस राज्य रे उधेई पारिबो नाही भक्तदास जदि कांग्रेस रो सभापति रहुचंती ताहाले कांग्रेस राज्य रे उधेई पारिबो नाही ब्रेकिंग न्यूज बड़ खबर कनक न्यूज रे एक्सक्लूसिवली एक कथा कहउचंती श्रीयुक्त मोहम्मद मुकीम तो टीवी स्क्रीन रे ये बड़ खबर आसीबा दरकार जे भक्तदास जदि पीसीसी सभापति रहुचंती कांग्रेस राज्य रे उधेई पारिबो नाही ब्रेकिंग न्यूज बड़ खबर सामना को आसुची राज्य रे कांग्रेस नेतृत्व प्रसंग को लेकर सीधा सड़क चिट्ठी लिखिबा हाईकमांड को पाखकू एवं सीधा सड़क कनक न्यूज रे एभली एक बड़ प्रतिक्रिया दबा बिग ब्रेकिंग बड़ खबर निश्चित भाव में कह जाई पारे जे कांग्रेस रे सबकिछि ठीक ठाक चली नहीं कांग्रेस नुआपड़ा निर्वाचन हारिबा को सहजरे ग्रहण करि पारु नाहंती मोहम्मद मुकीम को भलिया नेता एवं सीधा सड़क से चिट्ठी हाईकमांड को लिखिचंदी भक्तदास को जदि दायित्व दिया जाए बात कंटिन्यू करा जाए बात भक्तदास के नेतृत्व रे जदि कांग्रेस आगो को बढ़े ताहले एभली एक स्थिति उपजी पारे तो ये बिग ब्रेकिंग बा बड़ खबर सामना को आसुची एवं टीवी स्क्रीन को आसुवा ये बड़ खबर मोहम्मद
ब्रेक पर आपको स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज वर्तमान समय सबुठारु बड़ खबर होइछे जे भक्त दास को नेतृत्व को लेकर कांग्रेस वरिष्ठ नेता मोहम्मद मोकिम प्रश्न उठाउछंती। आ कनक न्यूज को मोहम्मद मोकिम कर बड़ प्रतिक्रिया सामना को यह आसुची जे भक्त दास सभापति थिबा जाए कांग्रेस राज्य में उधई पारिब नाही। मौसमी आम सहयोगी लगातार मध्य उपस्थित रहउछंती। मौसमी भक्त दास को लेकर मोहम्मद मोकिम तो कनक न्यूज को एक बड़ प्रतिक्रिया देलेनी। से कहउछंती जे भक्त दास जते दिन पर्यंत रहिथिबे राज्य में कांग्रेस उधई पारिबनी। पिछले भी भवानी चढ़ की देखा जाऊँगी कि पीसी सभापति भक्तदास वर्सेस वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद मोकिम भितर चली विवाद सभापति हवा दिन भक्तदास से विवाद चली रही है। देखते अनेक बड़ बड़ कांग्रेस कार्यक्रम मोहम्मद मोकिम आसुना। मोहम्मद मोकिम आज सोनिया गांधी को जो भावावेशपूर्ण चिठी लिखिं से किसी गुरुत्वपूर्ण पॉइंट अच्छी नजर आने चाहिए। से एत वरिष्ठ नेता है कि भी से 3 वर्ष अपेक्षा करुछंती चेष्टा करुछंती राहुल गांधी को भेटी पारु नांती। से कहउछंती कि वर्तमान राज्य जो नेतृत्व और तृणमूल स्तर काम करता कर्मी भितर धीरे धीरे दूरता वृद्धि पाउछि। जो लोक माने योग्य नुह जो लोक माने दायित्व नहीं ठीक से तुलई परिबेनी तांको हाथ में क्षमता पद पदवी दिया जाउछि किंतु जो माने तुलई परिबे काम सेमानंकु अणदेखा कर जाउछि संगठन ने। ता सहित कहउछंती कि वर्तमान राज्य कांग्रेस में जा स्थिति रही जदि एभली स्थिति लागी रहे ताले बूथ कर्मी ब्लॉक सभापति जिला स्तरीय नेता दल अणदेखा हे स्थिति आहरी दुर्बल हम। निकट आप देखिए संगठन सृजन कार्यक्रम होता कांग्रेस में जो कि गोटे स्वच्छता रहा जिला सभापति बछाब कांग्रेस ये गोटे योजना करके जिला सभापति बाछुला। से भी मोहम्मद मोकिम लिखिं दक्षता को देखागला नहीं सांगठनिक क्षमता को देखागला नहीं केवल दलीय भित्ति गोष्ठी भित्तिक निष्पत्ति लागला। तेणु लगुच कि मन भरा माने रही मोहम्मद मोकिम मन में अनेक गुड़िए द्वंद्व रही अनेक गुड़िए कथा रही जहाँ से राज्य नेतृत्व पर रही जहाँ से आलोचना ठीक भाव कर मौका भी मिलूनी। तेणु से सोनिया गांधी को भावावेशपूर्ण चिठी लिखिं मन मोहम्मद मुकिम को चिठी को लेकर अन्य कौन कांग्रेस नेतृत्व अन्य कौन कांग्रेस नेता से सहमति जाहिर कर पारती। मौसमी अन्य कौन नेता परवर्ती समय मोहम्मद मुकिम चिठी को लेकर सहमति जाहिर कर पारती। देखो बर्तमान आम जो नेता प्रतिक्रिया नौ तो सामने आसुना मोकिम सपोर्ट किंतु प्रचार पटे से भी मन भी कुड़ुचे किसी कथा एक आप देखिए गत काली कथा आप देखो चंद्रशेखरपुर थाना कांग्रेस कोषाध्यक्ष सिद्धार्थ दास कांग्रेस विधायक रमेश जेना ना एफआईआर कर अभियोग कर फोन में धमकाउछंती। सेपटे आप देखिए अनेक नेता बाहर जी कि भक्त दास को पीसी सभापति को विरोध कर पीसी सभापति आम प्रतिक्रिया नेबाक चेष्टा करूँ। से कि से दिल्ली दिल्ली संगठन मुखिया आलोचना करेंगे कहना कि जो मान विवाद लगी रही बुझामणा ठीक ना तो सीधा आपस आलोचना करूँ। मीडिया कहवा चिठी लिखा परोक्ष धमकेवा किसी मिछ प्रोपागंडा नहीं कि खबर करवा ए सब को से विरोध कर सीधा कथा कि जो मान सुविधा अच्छी सभापति से सीधा आलोचना करूँ। भक्तदास कहते कि अनेक नेता को साथी नहीं देखुए सब कार्यक्रम हो बड़ बड़ प्रोग्राम हो सबुठी सब नेता एकाठी कर कार्यक्रम करने चेष्टा करुच्ची ना के रही जाऊँगी। संगठन जब समस्त मन एक न एकता न रहा राज्य में कांग्रेस संगठन को चलेगा बड़ मुस्किल ग्रहण करुँच किंतु आप देखो मोहम्मद मोकिम वर्सेस भक्तदास विवाद आम किसी दिन धरे देखिलु देखुँ कि मोहम्मद मोकिम पूर्व जो बड़ बड़ प्रोग्राम सामिल होते आंदोलन हो आम जो भुवनेश्वर से आसुना कौन टिप्पणी से दौना राज्य नेतृत्व बड़ निष्पत्ति बैठक में मोहम्मद मोकिम उपस्थिति देखा मिलूनी। जेहेतु आप देखिए उपकूल में गोटे सीट कटक बारबाटी जो कांग्रेस दबदबा अच्छी संगठन मजबूत अच्छी। मोहम्मद मोकिम विधायक थे जो सोफिया फिरदौस विधायक अच्छे सोफिया फिरदौस को प्रशास विधानसभा बहुत भल अच्छे किंतु दल में मोहम्मद मोकिम को अणदेखा कौन इम्पोर्टाट कथा को ग्रहण कौन कथार आलोचना को डका जाए अनेक कथा रही जहाँ देखिए अनेक दिन धरी विवाद लगी रही परोक्ष से विवाद गुड़िक जल जल देखा भी जाऊला कि आज जो चिठी लिखिं सोनिया गांधी को मोहम्मद मोकिम ये स्पष्ट भाव छड़ा पड़ी कि मोहम्मद मोकिम भक्तदास को नेतृत्व को पसंद करना ग्रहण करना राज्य नेतृत्व पर से सीधा प्रश्न उठे और राज्य नेतृत्व सभापति आखपाखे जो किसी वरिष्ठ नेता बर्तमान रोचे सब कार्यक्रम में प्रश्न उठे से गोटे इंपोर्टाट कथा लिखिं कि जो मैंने काम करूना केवल देखाणिया भाव रही
भलिया लोकଙ୍କ हाथ रे दଳର दायित्व दिया जाउची जो माने परिश्रम करछन तांको हाथ रे काहे की दायित्व दिया जाउ नै आ एही प्रक्रिया जा रहे दळ मौसमी ए चिट्ठी रू कोन आपण अनुमान करि पारुचंती जेतु कांग्रेस पॉलिटिक्स को आपण बहुत निकटरू देखुचंती पाखरू देखुचंती एतु कोन आपण अनुमान करि पारुचंती जे मोहम्मद मुकिम संतुष्ट नुहंती भक्तदास को नेतृत्व प्रति ना से कांग्रेस रे ही संतुष्ट नुहंती वर्तमान कांग्रेस रे बहुत दिन धरे मोहम्मद मुकिम रहे आपण शरद पटनायक समय देखु से भी देखुलु कि मोहम्मद मुकिम को अणदेखा करा से मोहम्मद मुकिम निजे चाहूले पीसी सभापति देवाई कि जो पीसी सभापति रेस आ दिल्ली रे कार दबदबाजी से चयन से पछरे पड़ जाते जो भक्तदास आसिले से आम देखिलु मोहम्मद मुकिम एत सक्रियता भाव भुवनेश्वर कांग्रेस भवन को आसुना से बड़ प्रोग्राम में जोग दौना कि किस दिन बहुत भल भाव चलला भक्तदास कार्यक्रम समस्त साथी नहीं चले धीरे धीरे नुआ पड़ा उपनिर्वाचन फलाफल आसला परे ही मुकिम वर्सेस भक्त विवाद आउरी अधिक घनेछि ए विवाद एथिपाई घनेछि कि जेतबेले भक्तदास नुआपड़ा निर्वाचन फलाफल आसीबा परे एयरपोर्ट रो लेखि कहिले कि किछि विभीषण अछंती दल रे तापर किछि गणमाध्यम रे मोहम्मद मुकिम और रमेश जनगण सिरासर प्रकाश करिगला से समय मध्ये मोहम्मद मुकिम शृंखला कमिटी को चिठी लिखिथिले ओ सभापति भक्तदास के विरुद्ध रे कार्यक्रम भाबे शृंखला कमिटी को अनुरोध करथिले तो से विवाद सेतबेले लागि रहिछि जेतबेले विभीषण रो बम पकईले पीसी सभापति भक्तदास से दिन आम देखुचु किसी न किसी विवाद मुकिम वर्सेस भक्त लगी रही तो एत जो लंबा चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखिं मोहम्मद मुकिम लगुच कहीं चिट्ठी पर हुए तो मोहम्मद मुकिम आउ कि राजनीतिक बड़ निष्पत्ति निकट में नहीं पारती मन उठीगला कांग्रेस रु से बहुत चेष्टा करी दल एडजस्टिंग रहा चाहिए भी बर्तमान सीमा ये मोहम्मद मुकिम को एक प्रकार फ्रस्ट्रेशन रो प्रतिफलन बोली कहबा मौसमी से मोहम्मद मुकिम एकदम हताश हो कांग्रेस को अभियोग करी हाईकमांड को पाखरे तांको कथा पहुंचेबार से बारंबार विफल होउचंदी एवं शेषरे से चिठीर आश्रय नौचंदी माने अर्थात कोटी ना कोटी तांको भीतर गोटे हताशा भावना सृष्टि होईची किछि मास धरी बा किछि दिन धरी निश्चित भाव भवानी चिठी यही स्पष्ट कर मोहम्मद मुकिम बर्तमान चेष्टा करी विफल हेले दल में जहाँ चाहूँ करने पारना संगठन भी मजबूत हो पारनी अणदेखा कर जो निजर कथा रखा चाहते ठीक से हो पारना तो लगुच कि से चेष्टा करके हताश हो मनोबल भांगीगला आउ लगू ना कि भक्तदास और मोहम्मद मुकिम को भितर प्याच पड़ पार बोली हुए तो जदि वरिष्ठ नेता मैंने एकाठी हुए आलोचना करते किसी हो पारे किंतु भवानी गोटे कथा गोटे मेसेज सामना को आसूची कांग्रेस कि चारिआड़ आप जुआड़ देखिए सबुठी विरोधर सामना बर्तमान सभापति को करने पड़ला नुआपड़ा निर्वाचन फलाफल विरोध टी जोरसोर बाहर और सीधासल किसी जन अच्छा जो मैंने सभापति विरोध में अभियोग भी आणुछन्ति किंतु एठी रहिला कथा विभीषण उपाख्यानटी कोटना कोटी टिके कष्ट देइछि कि मोहम्मद मुकिम को मौसमी ए जो विभीषण उपाख्यानटी कोटना कोटी टिके परखेर हो पछे मोहम्मद मुकिम को कष्ट देइछि कि निश्चित भाव कष्ट देइछि कारण सिधासल एक पेपर में बाहरी गला मोहम्मद मुकिम गला कि तांकु सभापति विभीषण आख्या देगी प्रतिक्रिया रखिछन्ति बेली जाकी सभापति प्रतिक्रिया ना कारण नहीं नथिले किंतु से लगे तो देखियो कथा कांग्रेस रे आगामी समय रे कोन घटुची एवं कांग्रेस राजनीति रे बड़ हलचल मोहम्मद मुकिम कर कनक न्यूज को एक्सक्लूसिव प्रतिक्रिया जे जेतबेला पर्यंत भक्तदास पीसीसी रो सभापति रहिचंती राज्य कांग्रेस रो नेतृत्व नौचंती सेतबेला पर्यंत कांग्रेस राज्य रे उधई पारिबो नाही या परे कोन प्रतिक्रिया आसुची कांग्रेस बा पीसी सभापति ताको अपेक्षा रहिला किंतु एक गुरुत्वपूर्ण बा ब्रेकिंग न्यूज वर्तमान समय कनक न्यूज रे एक्सक्लूसिवली प्रतिक्रिया दौथिले मोहम्मद मुकिम मौसमी मध्य बाबद रे पीसी सभापति शरद पटनायक समय दल साधारण निर्वाचन में मात्र 13% भोट पाई 2025 रे भक्तदास को दायित्व दियागला निजे 3टी निर्वाचन हारी कांग्रेस विचारधारा ठारू भक्तंकर विचारधारा भिन्न निज संसदीय क्षेत्र में नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे तांको नेतृत्व रे 83,000 भोट रे कांग्रेस हारी पुओ कौशल राज्य दाबी करुछंती से सहयोग करुछंती कांग्रेस कर्मी द्वंद्व में 3 वर्ष है चेष्टा करी राहुल गांधी को से भेटी पारना एक उल्लेख करिसेंती जहां दलर नेतृत्व और तृणमूल स्तर में काम करुवा कर्मी भितर बढ़ुवा दूरता को दर्शाऊँ मोहम्मद मुकिम एक कहते कर्मी माने दल ठारू भावनात्मक भाव में दूर होती बूथ कर्मी ब्लॉक सभापति और जिला स्तरीय नेता दल में अणदेखा संगठन सृजन अभियान भल लक्ष्य दक्षता को देखागला नहीं गोष्ठी होई निष्पत्ति नियागला। तो ये एक्सक्लूसिव चिठी आम आपन को देखा मोहम्मद मुकिम जहाँ लिखिं सोनिया गांधी को निकट को एवं ये चित्र या दर्शाऊँ जे से तृणमूल स्तर कर्मी द्वंद्व एवं दिगहरा हतोत्साहित होती पुओ कौशल
राज्य ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ, ଏ ଚିଠିରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହ କଟକ ବାରବାଟୀର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟୁଛି ଓ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଜି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାବାବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। 3-4 ପେଜର ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଚିଠିରେ ଯୋଉ ସାରାଂଶ ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର ଭାବେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। मोहम्मद मुकिम ସେଥିରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ନିଜ ମନର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ରହିଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତାକୁ ହଟେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଇଭଳି କିଛି ବୁଝା ପଡୁଛି ମୋହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କ ଚିଠିରୁ। ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ କେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ପିସିସି ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସର ଏଠି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ କଥା ଏଇ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଲେଖାଯାଇଛି କି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ପିସିସି ସଭାପତି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ 13% ଭୋଟ ପାଇଥିଲା, ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିଲା, ଦଳ ଆହୁରି ତଳ ସ୍ତରକୁ ଖସିଥିଲା, ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିଲା। मोहम्मद मुकिम सहित मोहम्मद मुकिम सीधासख आम सहित लाइव फोन लाइन अधिक आलोचना करने एक्सक्लूसिवली उपस्थित अच्छा श्रीयुक्त मोहम्मद मुकिम आलोचना को आपको स्वागत। आपण कौन नेतृत्व को लेकिन प्रश्न उठाई सर? नेतृत्व को लेकिन प्रश्न उठे नहीं, मु जड़े कांग्रेस सच्चा कर्मी हिसाब रे वर्तमान जो परी भाव रे कांग्रेस दल गति करुची सारा भारत वर्ष रे एवं निर्वाचन परे जनरल इलेक्शन परे जो 5टी राज्य रे निर्वाचन हेछि एवं उपनिर्वाचन हेछि आमे सबुठी डिजास्टर होउची। मु तो आज पर्यंत बुझी पाली नहीं से दिल्ली रे आमे 3टा निर्वाचन रे सुन पाउछु एवं केंद्रीय नेतृत्व सेठ रहउचंती। ओडिशा रे मध्य सेही परि भाव रे गत थर आमे 18 जन लीडर को डाकिले दिल्ली रे आलोचना करिया पई एवं आलोचना सरला परे से तो शरद पट्टनायक को मनोनीत कराला पिसिसी सभापति भाव रे जे कि 6टी निर्वाचन कंटिन्यूअस प्रोसेस 98 हारी के आसुथिले ताली माप काटी हेबो जे अधिक निर्वाचन हारिबो एवं से दल नेतृत्व नबो एवं दल को रसतलगामी करिवो एवं 13% वोट रानी से छाड़ देई गले एवं से जो निर्वाचन लड़िले से 15,000 वोट पाई कि तांगर डिपॉजिट प्रॉफिट हैला। पुनश्च दिल्ली वर्तमान श्रीयुक्त भक्तचरण दास को दायित्व देइछंती। जो भक्त बाबू एकदा ओडिशा को भाग भाग करी कौशल राज्य तैयारी करिया पे संगठन करके आंदोलन चलैतिले एवं कनक टीवी मध्य तार साक्षी परवर्ती अवस्था रे आमे समस्त तांको कोऑपरेट करिया पे बसिथिलु, कोऑपरेट मध्य करूथिलु, किंतु से जोपरी भाव रे नुआपड़ा निर्वाचन को परिचालना करले आमे अनुभव करथुलु जेहेतु तांको निर्वाचन मंडली अछि से मध्य प्राय 6टी निर्वाचन भितरे गोटे निर्वाचन जितछंती, 5टी निर्वाचन निजे पराजय होइछंती एवं कंटिन्यूअस 3टी निर्वाचन से पराजय होइछंती एवं तांको दायित्व दिया हला एवं तांको निर्वाचन मंडली निर्वाचन हला एवं आमे 83,000 वोट रो हारिलु एवं हारिला परे निजे दायित्व न नहीं जोपरी भाव रे से दायित्व ठेली अन्य मान मुंडरे एवं परवर्ती अवस्था रे कहले जदि भूल हेइतो ताले आत्म समीक्षा करिवि तो मु सोनिया गांधी को लेखिबा उद्देश्य हला जे सोनिया गांधी को नेतृत्व रे कांग्रेस फैलतिला। सोनिया गांधी को नेतृत्व रे 10 वर्ष दिल्ली रे शासन करथिलु किंतु ता परवर्ती अवस्था रे नेतृत्व सोनिया गांधी को पाखरु राहुल जी को पाखु जिवा परे आमे 3टी निर्वाचन पराजय ग्रहण करिछु किंतु सेही राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी तो भक्तदास को सभापति करिसंती एवं जेतले भक्तदास सभापति हेले सेतले आपण मान तो कहितले जे सर्वसम्मति बा समस्तंकर एथरे सहमति अछि एबे असहमति काहे कि आपनकर देखो सहमति आमे समस्तंकर सहमति नै दिल्ली रे जहा को मनोनीत करा जाए
हाईकमांड जहाँ दायित्व दियंती समस्त कोऑपरेट करती तामाने निष्पत्ति थोपी दिया जाए हाईकमांड जहाँ दायित्व दियंती आज्ञा कांग्रेस दल होची हाईकमांड दल हाईकमांड जहाँ दायित्व दियंती ताकू समस्त कोऑपरेट करू जेहेतु निष्पत्ति दिल्ली आसी अच्छा किंतु से निष्पत्ति उपरे तर्जमा करियार समय आसी जाइछि भवानी बाबू आज्ञा बर्तमान जो स्थिति दे सारा भारत वर्ष कांग्रेस गति करुछि आज्ञा जदि आमे परी सच्चा कांग्रेस कर्मी से समस्ते मुह चुप कर बसवा और लक्ष लक्ष कोटि कोटि कांग्रेस युवक मान भविष्य अंधार आड़ जाऊँगी आमे बिहार रे 243 टा सीट मात्र 6 सीट जितुचु ता उपरे मध्य भोटर को कनेक्ट करा जाऊ नहीं मु तो निजे आपन को लागु छी जे मोहम्मद मुकीम ए चिट्ठी आपनकर गंभीरतार सहित हाईकमांड नेबे एवं किछि एक्शन नेबे बोली आपन को लागु छी ना एक्शन कहीं नेबे चिट्ठी उपरे हमें किछि हमें जो हमें नहीं वो कहली जो चिट्ठी रे गुरुत्वपूर्ण दिग को ने कि आपन उल्लेख करिसंदी से दिग रे एक्शन किछि नेबे बोली जेते बेले जयपुर रे जोधपुर हमर समावेश हेतिला आज्ञा सेठी मध्ये निष्पत्ति निया हेतिला पोस्टमार्टम करा हेतिला एवं युवक मान आगु बढ़िया प्रोत्साहित करथिले तो यथा उचित आमे कहूछे गोटे कथा एवं कहूछु आ गोटे कथा जड़े विरोध दल भूमिका निर्वाह करिया जड़े 83 वर्ष लोक हमर एआईसीसी मुखिया बसचंती एवं मु देखिली बिहार निर्वाचन रे सेमिति किछि पेजेस रहलानी ताकर निर्वाचन प्रचार करिया किंबा संगठन को आगु नवा आमे कांग्रेस जितवा केमतिया ब्रांडू बक्सिया केमतिया तो ये विषय रे आमे टाइम मागिलु मु तो राहुल गांधी को 3 वर्ष ला टाइम मागुଥିଲି टाइम दो रांती रे देखिया काहे कि राहुल आपन को भेटु नांती बोली लागु छी आपन को आमे चले विधायक छिलु आमे समय मागिल राहुल गांधी भेटिया पाए आलोचना करिया पाए से दिल्ली भुवनेश्वर आस्तिले गत 3 मास तळे एवं से पीएचसी मीटिंग पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी अटेंड करथिले सेठी मध्ये मु तां कहिथिली जे जानकी वल्लभ पटनायक तो परे आउ ओडिसा रे फेस के नांती ये कि टाइम ओडिसा फेस तो आपण किसी सभापति तांगे चौकी रे थांतु किंतु आपण जदी दिल्ली डायरेक्टली जदी किसी नेचुरल लीडर को दायित्व न दिए विभिन्न जोन रो कल कांग्रेस संगठित हो पारिबो नाही एवं ता ऊपर जेकोन कार्यक्रम नाही ने दल थारु कर्मी माने दुरौचंती ए कथा आपण केबे पीसी सभापति को कहिचंदी ओ विचारे सभापति को केबे आपण कहिचंदी बाबत रे चिठी लिखि परा देखुचंती जेकी पठेई सोनिया गांधी को पाखो नहीं मु कहली पीसी सभापति को बाबत पाखो को केबे क्षमा करिवे ए बाबत रे जणैचंदी आपण बहुत सारा हमें डिस्कशन करिचे पीएचसी मीटिंग रे गोटे पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी हुए सर्वोच्च कमिटी से कमिटी रे जा डिस्कशन हुए ता इंप्लीमेंट हुए नहीं हमें सेठी मध्ये कहिथिलु जे नरसिंह मिश्र पर जन वरिष्ठ नेता ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर देछन मु इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जीवी नहीं एवं सबले कांग्रेस तंगरा एवं पूरा विधानसभा तांको मोहम्मद मुकीम एथरो ए जो चिट्ठी रो एति के अनुमान करि परिबो कि आबे जे मोहम्मद मुकीम कर मन आ कांग्रेस रे नाही ए मोहम्मद मुकीम चाहउछंती कांग्रेस दल को लाइन ने आनिया पई तो केई गोटे तो आगो को भारीबो तो मु चिंता करली जे समय आसी जाई जे हमें आउरी नेतृत्व देरी करिवु ताल होय तो दिल्ली बुझिया को देरी हेई जीवो कांग्रेस जो 2-3 स्टेट अछि ता मध्ये हाथ छोड़ा हेई जीवो ने 83,000 वोट रे कांग्रेस हारिबा एवं भक्तदास को निज संसदीय क्षेत्र रु कांग्रेस हारिबा को नै करी अन्य नेता माने तो ए बाबद रे केबे चिंता प्रकट करी करी चिट्ठी लिखिनांती अध्यक्ष को हाई कमांड को अन्य नेता मानकर कार्यक्रम तांको विषय सीमित अछि मो कार्यक्रम मो सहित अछि एवं मु जा अनुभव करछि उचित कांग्रेस दल पई मु से पदक्षेप नै के चिट्ठी लिखिछि एवं एतरे कि हिंसा छपा दे समस्त कॉपी टू ऑल सीडब्ल्यूसी मेंबर्स करछि जे चिंता करिबार समय अछि समस्त को कांग्रेस को जो कथा हमें करिथिले जयपुर सम्मेलन ले ता इंप्लीमेंट करा जाउ नाही एवं ए जो संगठन सृजन कार्यक्रम आरंभ है एसे मध्य जे ग्राउंड रू लोकन का नेतृत्व को बसा जीवा पई निष्पत्ति नेला हैला एवं जो परि भाव रे लोकन बसा हला ता आपण जानि छंती एवं सारा भारत वर्ष मध्ये से हैला तेनो जेतले कांग्रेस निजे को निजे पोस्टमार्टम न करिवो ताले कांग्रेस सुधरी पारिबो ने आमे कांग्रेस दल भितर जणे सच्चा कर्मी एवं कांग्रेस को आमे जोड़ीचु आज जदी कांग्रेस
कटक सहर परि जगह रे जेतले कांग्रेस सरकार थिला जिति पार नथिला ता परवर्ती अवसर आमे जेतले बिजू जनता एक कथा कहा जाए जे कांग्रेस रो जदि राज्यर किछि वरिष्ठ नेतांक सहित राहुल गांधी भल संपर्क राहुल गांधी तांको खोजंती ता भितर मोहम्मद मुकीम आसंती पुणी आपण को किए दूरेई देला राहुल गांधी को भेटिबा को भक्तदास सेतरे प्रतिबंधक खेलेनी तो ताने सुनतु जे प्रतिबंधक होंतु किंबा न होंतु जहाँ मु जने कांग्रेस कर्मी हिसाब से अनुभव कली मु ताकू सोनिया गांधी को सर्वोच्च नेतृत्व को लिखिक देखी जे आपनकर नेतृत्व रे याकू पुणी आपण ओपन हार्ट सर्जरी करंतु समस्त को नेकी सुधारी कांग्रेस को मजबूत कर जदि कांग्रेस हाईकमांड ए बाबद कौन सी निष्पत्ति न नियंती ताले मोहम्मद मुकीम को आगामी अभिमुख्यटी कौन हबो मोहम्मद मुकीम कांग्रेस छाड़ देबे हाईकमांड निष्पत्ति न नेबे बोली काहे मु भाबिली वर्तमान तो जदि जदि बोली आपण भाबंतु जे जदि हाईकमांड निष्पत्ति नौ नांती कोनोसी पॉलिटिकल आंसर देबी नै वर्तमान भवानी बाबू मोर दृढ़ विश्वास अछि मु जो चिट्ठी लिखी छी बहुत आत्मविश्वास से लिखी छी एवं जहाँ सत्य कथा मु लिखी छी राहुल गांधी सब कहती डर मत वो से भाषा को नहीं कि आम भारतीय जनता पार्टी डरू ने आम दल तो गणतांत्रिक दल आम समस्त अधिकार अच्छी आम से दल भितर जहाँ भूल ठीक अच्छी जेहेतु आमको से भेटू ना आम सहित आलोचना हो नहीं आम गोटे छोटे इन्स्टान्स बर्तमान बहुत एमती अच्छी जोटा कि आम खोलिले बर्तमान इतिहास हम तो लंबा कहानी हम कि मुझे जाऊ ना मुझे चाहूँगी कांग्रेस सुधरू जो जिनिस जदि आपनक चिट्ठी को भाबी नियंतु जदि आपनक चिट्ठी को गुरुत्व न मिलला हाईकमांड गुरुत्व न देले ताले मोहम्मद मुकीम आगामी समय रे करिवे कोन मु पूरी सुनस्त आपन कहबी जे मो दृढ़ विश्वास अछि सोनिया गांधी चिट्ठी को गुरुत्व देबे एवं गोटे आलोचना ता ऊपर हबो भक्तदास आपनकर सभापति हिसाब रे पसंद रहंती वर्तमान निर्यास बाहरिबो के कहले भक्तदास आपनक पसंद रो पीसी सभापति रहंती वर्तमान भक्तदास नेतृत्व में ओडिशा रे कांग्रेस ही पारिबो नै ता सूचना मिली गला हमको वर्तमान नुआपड़ा इलेक्शन रो माने भक्तदास रहिले कांग्रेस उधेई पारिबोनी नै बिल्कुल ओके ये बिग ब्रेकिंग बा बड़ न्यूज बा बड़ खबर बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद मुकीम Hey, so you see that fan? Would be a shame if something hit it. You thought your e-commerce site was ready, but your flash sale could turn into a flash fail. Cloudflare's business plan gives you 100% uptime guaranteed to ensure your site stays up 24/7 and lets you see all the traffic that comes to your site, the good, the bot, and the ugly. So you can protect your site, your sales, and your reputation. Get your when it hits the fan plan at cloudflare.com. Priya added a hotel to her flight just because it had a floating breakfast. Expedia, made to travel. We're joined by Union Minister Jyotiraditya Scindia, who's handling crucial portfolios relating to telecommunications, to communications, India Post and Department of Northeast Region as well. Minister Scindia, thank you very much for joining us. Always a pleasure, Parikshit. This is a time when the government is brainstorming with the industry ahead of the union budget. There is also a discussion within the government on the next generation reforms after GST. Could you give us your thinking on what needs to be done now for the telecom sector in order to make it easier for companies to get into India, make investments for the future? What can they expect in the weeks and months to come? So first of all, this is already a deregulated sector. Secondly,
My process that we undertake both in the Department of Telecom and on the Department of Posts is an iterative process. We have set up 6 advisory groups in the telecom sector, covering the whole value chain within telecom, from equipment manufacturing to service providers across the board. And those 6 advisory groups meet with me on a regular basis. On a regular basis, issues are brought up, issues are facilitated, resolved, and we move on to the next items on the agenda. So for us, within the DOT as well as Department of Posts, it's an ongoing process. For example, in the Department of Posts, we're coming out with 6 new products across mails and parcels. We're developing SLAs, service level agreements, in terms of responsiveness, delivery across those 6 products. So it's an iterative process. So we always are, if you will, if I can give you an analogy, on a moving treadmill and never static. All right. So let me ask you about the big development that has come from the Supreme Court, with the court saying that the government can go ahead and reassess all of the AGR dues of Vodafone Idea. Having said that, what next is the government planning to do? What are the options? So post that judgment, which is what is being examined within the department today, we are also waiting the formal request from Vodafone. Once that does come through and we complete our evaluation internally, we will then put forward our recommendation of what can be done and what cannot be done. But that is still work in progress. The judgment, as you know, is a very recent one. Once the contours of that environment can be shaped, then we will certainly bring it into the public domain. But right now the judgment needs to be evaluated, and against the judgment, what is possible, what is not possible needs to be evaluated, which is what the Department of Telecom is working on right now. Right. Now, as per reports, the AGR dues of Vodafone amount to around 83,500 crore rupees. Now, what will be the contours of the package? How would you look to reducing the liabilities for Vodafone? I'll repeat what I just said. It's being worked on within the department at this point of time. It's too early for me to comment on that. Once the department comes up with what is possible and what is not possible, at which point of time I will exercise my own opinion on that. But we are a little early in the process for me to make a comment on that at this point. By when do you plan to complete this assessment and maybe come out with a decision? I think in the next couple of weeks we should be in a position to be ready to make a comment on it. Right. So maybe a final decision on how the government will give a relief package and its contours to and the contours of that relief package, that will be clear by year end? Certainly so, hopefully, yeah. All right. I would also like to ask you, the government is a 49% equity holder in Vodafone Idea. How do you see the growth of the company here on? What are your expectations? Because you're a major stakeholder. So I do believe that they have a robust capex program in place. They also have raised one of the largest public offerings in the last 6 to 8 months in terms of their equity. They've done an FPO, follow-on public offer. There is certainly the overhang of the dues to Government of India. They're a very low leverage company at this point of time. And the reason for that is because the dues of GOI are considered as leverage by banks. So I think once we are able to shape the contours of what can be done, it will also give them space to maybe raise some amount of debt. The cash flows are fairly robust going forward as well. But certainly they will look at investing in the network as well. But I think that's all for management to look at. We are a shareholder and our responsibility
ends at that. The management of the company, the future roadmap of the company has to be fixed by the management and not by shareholders. Right. You had told us in our recent interaction that you don't want to make this a PSU. Now, after the Supreme Court judgment, has the view changed? Not at all. So no further increase in stake? Not at all. The minute you cross the 49% Rubicon, you are then tethering on the border of making it a PSU. And that certainly is not the intent. अरे ये कौन पापी एहाकु रखि दबा एहाकु रखि परिबा नाही जे ओलेंस रे एते भल पाइबा लुचि रही छी ता पई इजी एहा उलुरिबा को देई न थाए कोमड ओल र ख्याल रखि थाए वुलेंस र ख्याल इजी Big dreams start small. At GoDaddy, we help you take that first step and every step after. From getting your domain to creating your website, email and online security, we've got you covered. You don't need to be a tech expert. You just need a starting point. GoDaddy gives you the tools, the expert support and the push to make it real. Your brand starts here with GoDaddy. Government of India. Right. I would also try and understand from you, because there have been a lot of reports on the contours of this proposed relief package, and those reports said that the Telecom Ministry is looking to significantly reduce the AGR dues liability for Vodafone, and there is a plan to include in the relief package the interest, penalty on interest and interest on penalties as well. Could you give us a confirmation? I have said that to you and I'm saying it again. It's too early for me to comment. Let the Department of Telecom work on the contours of the judgment of the Supreme Court. Based on the contours of the judgment of the Supreme Court and the rubric that they have defined, see what is possible and not possible. It's too early for me to comment on that. Bharti Airtel has also requested the government for reassessment of all AGR dues. Are you considering the same? Well, no official request has come to me as of now. In the event that they would pursue that, again, that is something that the court of the land will have to decide. When it comes to waiving off or reducing the AGR dues for Vodafone Idea, would this be specific to one company, or whatever kind of resolution that you come forward with, relief package that you come up with, it will be for everyone? The Supreme Court judgment is qua Vodafone India. So whatever we come up with has to be qua Vodafone India. We cannot cross the border of the Supreme Court judgment. So you feel that the question of parity for the whole industry doesn't arise here? As I mentioned, the Supreme Court has made a verdict on Vodafone India, and that's what is on our table today. So very simply put, any company which wants similar relief, they will have to approach the Supreme Court. Absolutely. Right. You know, I would like to ask you about some other developments that have been taking place within the telecom industry. This is with regard to the SIM binding initiative that you've just launched. And this is for all messaging apps such as WhatsApp, Telegram, Signal. All of them have to comply with the SIM binding norms within 90 days. Why has this been done? And what is the larger intention? Because the industry is saying that there should be a pause on this for some time to allow for wider consultation. So let me say this, that technology is a wonderful unifier. And just look at both the breadth and depth of technology permeation in India. You have today close to about 1.2 billion mobile connections in our country. We have crossed 1 billion internet connections in our country. And today telecom is more than a digital highway. It really opens up the vista for every single person, urban or rural, north, south, east or west, from any part of our country to connect to the world. And therefore the digital carriageway is, even though it's an invisible carriageway, in many ways is an even more, or rather bigger propellant of economic growth than possibly physical highways. Having said that, it does also carry with it
the ability for non-social forces to be active. And that certainly is in the area of fraud, in the area of cybercrime, across the board. And I think it's extremely important to be able to, whilst providing the gateway for every single citizen in our country, also protecting them from cybercrime, from fraud, and so on and so forth. And this is consistently an issue that has come up. The fact that I can insert a SIM in my mobile, get a WhatsApp connection, remove the SIM from my mobile, and be without an identity, using it for cybercrime and cyber fraud. In the last fiscal alone, people across the length and breadth of our country have lost close to 22,800 crores to cyber fraud. It is my responsibility as telecom minister to protect my consumers. And this indeed is a step towards that. As far as consultation is concerned, we've had 5 to 6 rounds of consultation, starting in early April, into June, latest even close to November. Across the board, there has been a clarion call for this. From a security perspective as well, it's extremely important. And therefore, this is something that is the need of the hour. It also dovetails into all the other steps that we have taken to protect our consumers, from Sanchar Sathi to Astra to Kayor to across the board. And I think it's important to be able to know the identity of the person who is using these platforms. Right. So clearly no pause, because industry is seeking that we need to think about large volumes of frauds originating from outside the country. Fraudsters can obtain Indian SIM cards via mule accounts or remote devices, and therefore there should be a pause. So there is going to be no pause now? There is always a view of looking at every protection clause as a glass half full or a glass half empty. So what you are saying to me in your answer or your query to me is that there are other ways to do it. Does that mean that I should not circumvent the most obvious ways to do it? I don't buy that. All right. The next question, there are reports coming in that the Telecom Ministry has asked private mobile phone makers to preload a government-owned cybersecurity app before selling phones. Now, this is for the security of customers all around the country. Has that been done? Have the directions been issued? And what exactly is the expectation? So all of this ties in with the security of the customers. So Sanchar Sathi portal and the Sanchar Sathi app has done a yeoman service. And let me say this on television with you. And let me thank our consumers also, because the success of this could not have been possible unless there was a Jan Bhagidari approach. And it is due to that Jan Bhagidari approach that we've been able to protect our consumers. This is a step in that very direction. If you're able to load this on, then if I lose my phone, immediately that app is on my phone, which I can then register and make sure that my phone is not used by any fraudulent individual. It's a step to protect the consumers at the end result. If they have lost their phone, they can then locate their phone in a much quicker way. And we've got many stories of, we've traced almost 7.5 lakh phones, recovered almost about 6.5 lakh phones to this portal. And therefore, this will be a step in being for customers to be able to help themselves from a security perspective. So is this mandatory, and by when do they have to comply, all phone makers in the country? I believe that this is being issued in the next couple of days, and it will give people time to be able to adopt it. All right, so it will be mandatory and everybody will have to comply within a certain timeline. Now, speaking on the issue of spam calls, you know, there are days when you get more spam calls than genuine calls in a day. As telecom minister, how irritated do you get with this? And so what customers can expect? Let me tell you that this was certainly the case about 6 months ago. In the last 6 months, the steps that we've put in place, Sanchar Sathi portal has had close to about 10 crore hits. Sanchar Sathi app has almost about 1 crore hits. Our Astra software, in terms of recognizing people who use multiple, the same credentials to get multiple lines, has disconnected close to about 82 lakh people.
Our financial fraud risk indicator has been adopted by the RBI and mandated all banks and financial institutions to be part of it. We have a digital intelligence unit with 750 stakeholders on board to be able to protect people's financial resources, because this digital expressway is now also used as a banking expressway. So I think all of those steps are in place which are yielding great dividends to the consumer. Let me give you an example. Kayor, which was a calling line identification software that we put in place, we had close to about 1.35 crore spoofed calls when we started it off. Today, those running these rackets, both domestically and internationally, have realized the efficacy of the software, and the number of spoof calls coming into India or from within India being generated has dropped from 1.35 crores a day to only 1.2 lakhs a day. So there's a 97% drop. Why? Because you put a firewall in place to protect your consumers. And that's also my job as telecom minister, which all of these elements, Kayor is only one element, all of these elements together are putting in place to protect my consumers. Introducing Silk Brownie. Dig in to give in. On the issue of satellite spectrum allocation, there are still some consultations going on between the Department of Telecom and TRAI. By when can we expect the final decision and the spectrum to be awarded? So that depends on TRAI. We've sent a back reference to them. As soon as TRAI examines it and reverts back to us, we'll be ready. But I also think that there is a justification for deeper, wider, and extensive consultations, both between DOT and within TRAI. Both have very, very deep reservoirs of knowledge. There must be that exchange so that when we come out with a policy, everything has been explored. The other option is to come out of the policy with alacrity without doing your due diligence. And if you do that, then someone like you will have another 100 questions for me, right? So I'd rather wait and do my due diligence properly before I come out with the policy. So what is the current point of difference which is taking time? There's no point of difference. It's a point of extensive discussion and consultation in terms of what the rollout of the system should be. What should the percentage of AGR be? How do we ensure maximum inclusion? How do we make sure that those who are not connected get connected? So all of those factors require deep consultation. You may aspire for a certain policy. There may be drawbacks of that policy. That needs to be examined. So all of those dimensions need to be examined before you enunciate a policy. Right. We read that the DOT is planning to impose a 5% annual spectrum usage charge on satellite internet providers. Will you be looking to give a discount too in order to connect hard-to-reach and remote places? So let me not comment on it. There are a lot of ideas that are on the table within the department, from me. So let that all be refined, let that be distilled, and we will come out with an efficacious policy. By year end, or you think this is going to spill over? Again, this is something that's on TRAI's
plate. I do not want to speak on behalf of them because they are a regulator and I must respect their time and their judicious judgment based on the policy that we have come up with. Just a prima facie view on the demand for Digital Bharat Nidhi, subsidy for user terminals for satellite broadband services. How important is that? Well, I think it's important to understand that DBN is a Nidhi which is not individual focused. It is area focused. Telecom is an industry which is area focused, not individual focused. So I don't think it would be either wise or pertinent to look at DBN as an alternative for that subsidy. As I mentioned to you, we are examining various modes for that inclusion. So let us come out with a policy which may be sounder than that. Right. To speak to you about the telecom PLI scheme, you recently gave an analysis, the results of the PLI scheme, and you said it has generated 91,000 crores in production, 96,000 crore worth of production, 18,100 crore worth of exports, 30,000 new jobs. What about the next support for the industry in the form of PLI scheme, in the form of PLI 2.0? What is being considered for the future? So I think let us first get the granular results for PLI 1.0. We still have a year to go. Based on that, there's been a great fillip that has come to the telecom equipment manufacturing cluster based on this PLI 1.0. And then we will certainly see what else can be done going forward. Right. Speaking about India Post, a project that you've been working on very keenly over the last 2 years, you want to make this a public logistics giant. In terms of gaining a market share in the delivery ecosystem in the country, what's really the vision that you're working with? So the vision that we are working with is that this must become the logistics powerhouse of the country. We have close to about 1.65 lakhs points of presence. No distribution channel, may I dare say, not in India, but in the world, has that delivery pipeline that India Post has. The world is moving very, very rapidly towards delivery of product at doorstep. We believe that we can be a huge fulfillment aggregator on that, not only directly, but for other fulfillment agencies as well. So mail and parcel, even though mail worldwide is going through decreasing volumes, but we see that very targeted timeline specific mails have a very, very important revenue niche still in India. We're coming out with 2 products. One is a 24-hour speed post and one is a 48-hour speed post with guaranteed SLAs. Our aim is to capture close to about 20% and 40% of that market over the next 5 to 6 years, taking our cumulative market share to about 8 to 10% in this space. The same in parcels. Not only are we working at directly delivering parcels, but also becoming the fulfillment aggregator for a lot of front-end firms like an Amazon or a Shiprocket or a Flipkart. And we've tied up with a number of them. Third, we're also looking at citizen-centric services, where through our 450 Passport Seva Kendras, we've garnered close to about 250 to 300 crores worth of revenue over the last fiscal. Through our Aadhaar card services, almost 13,000 centers there, close to about another 250 crores in terms of revenue. We've tied up with AMFI to become the mutual fund distributor for a number of mutual funds, which will again become a revenue growth area. So 5 years down the road, we are looking at turning India Post from a cost center into a profit center, fired mainly on 3 engines: mail, parcel, and citizen-centric services. PLI and POSB both are the financial sector verticals, which will remain a very fundamental part of our play, but really becoming a fulfillment aggregator for delivery
across the length and breadth of our country. Growth plans, what are your expectations from BSNL going forward? What can we expect in FY26 end and FY27? BSNL is charging forward. Our H1 numbers, we've increased our top line by almost 14% compared to H1 of last year. Our EBITDA operating margin H1 of this year is up almost 34% compared to last year. Last year we closed at 5,139 crores operating margin. This year we hope to take it up to close to about 7,000 crores. So on a cash basis, BSNL certainly has turned the corner. There is a huge depreciation hit because of the 25,000 crore capex that we underwent last year, which is almost a 2,500 crore non-cash item on our P&L. So as long as my operating margin is increasing at a fast clip of greater than 50% year on year, that's something I'm extremely satisfied about. Right. My final question would be about your message to the industry. Out of all these hearings related to Vodafone and AGR dues that have been taking place, while the government considers something for the future, considers a resolution plan for the overall health and the growth of the sector, what telecom industry is extremely robust in India. Please look at the worldwide comps, and it's only India that is growing at such a fast clip in terms of customers, in terms of top line, in terms of bottom line, at the cheapest cost. India is a great example of high volume, low cost. We are the lowest voice carrier in the world. We are the lowest data cost carrier in the world, at close to about 8.47 rupees a GB, which is 11 cents. On the world pricing index, India is at 1.49, the international pricing index, compared to a country like the United States of America, which is at 49. So we by far are the cheapest provider of quality voice and data across the globe. All right. Thank you very much for speaking to us, Minister.
what I can foresee over next few years, most of the payments will get into an AI agent, and most of the payments will be built from the agentic AI first. With that, the acceptance, or rather the use of the digital currency or things like stablecoin across the globe will become far more prevalent than what it is. Payments will increasingly become more and more invisible than what they even are right now. If you believe an education should offer more than just a degree, if you seek holistic learning that challenges convention, if you dream of leaving the world better than you found it, if you want to script a better tomorrow, if you're restless for opportunities that match your ambition, if you have a purpose, we have the program. A pioneering organization that blends sharp legal strategy with a powerful market network, transforming real estate opportunities into enduring value for its clients. Witness the incredible journey of GHL India. This weekend, only on ET Now. Typhoid doesn't just affect children, it can affect anyone. If left untreated, it could damage other organs. That's why it's crucial that we protect ourselves and our loved ones from this disease. So go ahead, consult your doctor for early vaccination. And don't forget, this is not a minor illness. Typhoid needs attention. हिट रिफ्लेक्शन कोटिंग रे तैयारी प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक देई थाए टाणुआ खरा रे भी ठंडा पानी रो गारंटी जहाँ पीवा पानी पाई संपूर्ण रूपे सुरक्षित प्लास्टर अच्छी तो गारंटी। ये है सस्ता ऑयल, पर क्या ये सच में सस्ता है? लेट्स सी। नहीं, ये तो 800 ग्राम्स है और फ्रीडम है 910 ग्राम्स। पैकेट पलट के खुद समझिए, या फिर मेरी तरह फ्रीडम पे भरोसा करिए। सही प्योरिटी, सही क्वांटिटी। Like that.